तमाम साथियों को या अली मदद. Thank you for joining us this morning. We will start on our new Farman, Baitul Khayal Mulaqat, Ahmedabad, India, February 23rd, 2018. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Maulay Mehrban, Madad Farma. Ya Maulay Mehrban, Madad Farma. या शाह करीम अल अकरम या शाह करीम अल अकरम मदद फरमा मदद फरमा. नूर मौलाना शाह करीम हुसैनी हाजिर इमाम. तौफीक ताईद हिम्मत व यारी मौला. तौफीक ताईद हिम्मत व यारी मौला. या मौलाए मेहरबान, हम गरीबों की मदद फरमा मौला. या मौला, हमारा हाथ पकड़ ले मौला. हमें इस रास्ते पर आगे से आगे चला मौला. अपने नूर की रोशनी में हम गरीबों की हिदायत फरमा मौला, ताकि तेरे ही नूर की रोशनी में मौला हम इस रास्ते पर आगे बढ़ सके मौला. या मौलाए मेहरबान, रहम कर मौला, मदद कर मौला, करम कर मौला, फजल कर मौला. तमाम साथियों को एक बार फिर या अली मदद. फरमान मुबारक. Please recite the Holy Salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. My beloved spiritual children, first of all, on the occasion of this mulaqat, I give to each and every one of you individually my warmest, my most affectionate, and my special loving blessings. Kanavadan, Kanavadan, Kanavadan. Ameen. My beloved spiritual children, every murid has a soul. That soul is eternal, and therefore, during your lifetime, you devote time and care for your soul, not only for your physical body. You enter into Bethel Khayal because it is your choice, and there should be no pressure. I don't want spiritual children coming to the Imam of the time because their parents have said you have to go, or their friends have said you have to go. You should be here because each one of you wants to be able to practice Baitul Khayal. I hope that is well understood by my Jamaat and that you are here of your own individual wish. Niyat, intention, plays a great role in our deeds, offering our khidmat, offering our dua, and performing Baitul Khayal ibadat. Imam is reminding us that it is your wish, your individual niyat, that you want to do this. Why is it so important? Because we need to remember that we have a soul which is eternal. The life of the journey of the soul is a long life, unlike the physical body, which is temporary
and very, very, very short life. If we think of 100 years, and how many days would that be? 365 multiplied by 100. Out of that, only 4 days are physical, 96 days are the life of the soul, the journey of the soul. How much time or what do we do for our physical body when physical body is only for 4 days in 100 years of total life? 96 days are for the soul. Are we keeping a balance? Are we keeping a balance between the physical and spiritual life? Between the physical body and the soul? The life of the soul is of 96 days. Life of the physical body is of the 4 days. Are we keeping balance? Imam is reminding us here that in your lifetime, you must take time, devote some time, and take care of your soul, which is eternal, and its life is much, much, much longer than our physical life. यहाँ पर हमारे उर्दू स्पीकिंग दोस्तों के लिए मौला फरमाते हैं कि देखें, आपकी रूह जो है वो हमेशा के लिए है, जिसके अंदर जिस्म का सफर और जिस्म बहुत ही कम अरसे के लिए है। एक मिसाल ली गई कि जिस तरह से 100 दिन को अगर हम लें कि 100 साल की जिंदगी है, जिसमें से 4 दिन जिस्म के हैं और बाकी सारे दिन रूह के हैं, क्योंकि रूह का जो सफर है वो बहुत ही लंबा है जिस्म के कंपैरिजन में। जिस्म 4 दिन और रूह 96 डेज। क्या हमने अपनी जिंदगी में बैलेंस रखा है कि जो 4 दिन के लिए है, जो जिस्म कल खत्म हो जाने वाला है, उसके मुकाबले में जो रूह 96 दिन के लिए है और जिसका सफर बहुत ही लंबा और हमेशा के लिए है, क्या हमने उसके लिए एक बैलेंस रखा है? क्या हमने अपने रूह के लिए 96% of the time दिया है? When our soul is requires 96%, because the journey of the soul is 96%, journey of the physical body is only 4 days. That is the comparison. Are we keeping a balance? क्या हमने बैलेंस रखा है? मौला फरमाते हैं, अगर यहाँ पर आप अपनी खुद की मर्जी से आए हैं, क्यों कि नियत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि हम जो भी काम करें वो अपनी खुद की नियत करके, इंटेंशन इज रिक्वायर्ड, नियत इज रिक्वायर्ड। We are not doing this because somebody told us to do it. ये हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि किसी ने हमको कहा, क्योंकि फिर हमारी नियत नहीं होगी उधर और
अमाल का दारोमदार नियत पर है. When our action requires intention. So this paragraph is well understood that our soul is eternal. The journey of our soul is long. Journey of our physical body is very, very, very short. Only 4% of the time compared to 96% of the time is the journey of the soul. Are we keeping a balance? Do we have that in our mind? How long our journey of the soul is? Have we made that intention to give the time, to devote the time and the care for our soul, which is of long life, 96% of the time? Inshallah, Jamaat would understand this, and it is their individual choice, niyat, intention, that they will take the ball and they will come and do something for their own soul. Mullah says the second point is important, the body and the soul, what we call deen and dunya, faith and world. Murid devote time to both, to their faith and to the world. Devoting time to your faith should bring you spiritual enlightenment, individual happiness. This is a very important point. Let's take a couple of minutes to understand this. Imam is making a second point regarding the body and the soul, what we call deen and dunya, or the faith and the world. Murids. Imam does not use word everyone. Imam used the word murids. What is and who are the murid? Murid literally means who follows Imam. They are the murid of the Imam. If you are the murid of the Imam, you are following the Imam. So Imam is not talking about everyone, but those who have said, I will follow my Imam. Murid devotes time to both, to their faith and to the world. Then Mullah says, devoting time to your faith should bring you spiritual enlightenment, individual happiness. दुनिया में जो भी कर लेंगे हम, वहां से हमको खुशी नहीं मिलने वाली है, वहां से हमको रोशनी नहीं मिलने वाली है. Doesn't matter what we do in our dunya, dunya will not bring us spiritual enlightenment nor individual happiness. It is the devotion that we give, the time that we give to our soul, that is what will bring you spiritual enlightenment and individual happiness. Doesn't matter what you do in this physical world, it will not bring the light and the happiness. क्या चीज रोशनी लाएंगी और क्या चीज खुशी लाने वाली है? वो आपकी इबादत है. अगर हम खुशी दुनिया में ढूंढ रहे हैं तो वहां से नहीं मिलने वाली है. खुशी कहां से मिलने वाली है? इबादत के अंदर से. अगर आप अपना वक्त देते हैं अपनी रूह के लिए, अपने मजहब के लिए, तो फिर
वहां से आपको नूर, लाइट, रोशनी और खुशी नसीब होगी इंशाल्लाह. And when you sit in Baitul Khiyal, sit in peace, sit in humility. Do not sit in greed. That is not for you to take. That light, inshallah, will be given to you, each one of you, at least once in your life. And for that, I give you all special blessings. Khana Vadan, Khana Vadan, Khana Vadan. Mullah again reminds us that ibadat is a matter of enlightenment, enhancement, elevation of our soul. It's not a matter of the world, of the physical world, where we demand and take things. In ibadat, it requires humility, peace, and not greed. And Mola wants and wish us to have this light at least once in our lives. And therefore, Mola is giving us special blessing, meaning special duashish, special duashish, and special duashish. That is very important that we have these blessings, this will and wish, amar of the Imam. If Imam want us to have something, then we will have it. Because Imam's blessing is on us. And remember, when Imam gives us the bowl, along with the bowl comes two other things. It's like a package deal. Bowl, blessing, and the nur all comes in one. It's a one combined package deal. And because Imam want us to have that nur, experience of that nur, only thing we have to do is sit in ibadat with humility, with peace. चूंकि इमाम फरमाते हैं कि इबादत में आपको क्या करना है और किस तरह से बैठना है, क्योंकि इमाम चाहते हैं कि कम से कम एक मर्तबा हमारी जिंदगियों के अंदर हम इस नूर का तजर्बा करें. आपको याद होगा कि नूर किसी मोमिन को 5 तरीके से, हमारे 5 सेंसेस के जरिए से हासिल हो सकता है. और इंशाल्लाह एक नहीं, पांचों 5 तरीके से हासिल हो सकता है. क्यों? इसलिए नहीं कि अजीज कहता है, इसलिए कि इमाम की ख्वाहिश है. ये इमाम की ख्वाहिश है और इमाम का अमर है कि कम से कम हर एक मुरीद की जिंदगी में एक मर्तबा वो इस नूर का तजर्बा करें. चाहे वो दिखने का तजर्बा हो, सुनने का हो, सूंघने का हो, चखने का हो या छूने का हो. ये 5 किस्म से नूर आपको छू सकता है. There are 5 ways this noor can touch you. Seeing, hearing, smelling, tasting, or touching. 5 senses, 5 ways
of Noor to enter or come to you. Inshallah, not one, but you may have all 5 experiences, as Imam's special blessings are with you. Ameen, Ameen. Imam further says, if inshallah you are successful in sitting in Baitul Khiyal, keep this as a personal matter. It is yours. It is not to be shared with others. It is not to be discussed with others. It is yours individually. And inshallah, that light, when it touches you, will stay with you through your lifetime. But keep it as your personal gift. Here, answering to one of the question in previous weeks, I'd like to remind or reiterate what I said earlier, that Imam truly want us to have this blessing, because Imam's sole purpose of coming to this world was to guide you toward the elevation of the soul. Imam's purpose of coming to this world was not to build road, schools, hospitals, but his sole purpose, and you can see when it comes to the deen, your soul, nur, light, elevation, Imam always and always gives special, special blessing. Imam gets emotional over this. He gets more generous over this, because he truly wants each one of us individually, every one of us, to have this experience. And it is between you and the Imam. Imam has given you this bowl, do not talk about your bowl. Imam has given you opportunity for the ibadat, keep that quiet to yourself. Was the question, and this was the answer. When you do wake up for the ibadat, when you do go to Jamaat Khana for the ibadat, don't talk about it. Keep it to yourself. Don't show off that you are waking up early or you are going to Jamaat Khana, because that is very personal and very individual. And when you do have some sort of experience, keep that also to yourself. Why? Because others will not understand if they have not have the same experience as you do, because it's not one kind. It is not just like seeing the didar of the Imam. It is truly a unique experience and very unique to each individual. How would anyone else would understand? आप समझ गए कि जब इबादत की बात आए, बोल की बात आए और नूर की बात आए, तो उसको आप अपने पास रखें, क्योंकि ये ऐसी चीजें नहीं है कि जिसको हम फैमिलीज में, फ्रेंड्स में, जमात में, मार्केट में डिस्कस करें। जब आप इबादत के लिए उठें और इबादत में जाएं, तो कीप इट टू योरसेल्फ। आप अपने पास अपने इस अमल को खानगी में रखें, सबको ना बताएं कि आप इबादत में जाते हैं।
सबको ना बताएं कि आप सुबह को जल्दी उठकर इबादत करते हैं, उसको अपने पास जाती तौर पर रखें। और जब आपको इन अलग अलग तरीकों से इंशाल्लाह तमाम के तमाम दीदार का तजर्बा हो तो उसको भी अपने पास रखें और किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि वो एक नहीं है, वो अलग अलग किस्म के दीदार हैं और हर तजर्बा बहुत ही इंफरादी है। अगर आप किसी को बताएंगा तो वो समझ नहीं पाएगा। So just keep it to yourself. Keep it to yourself. When it touches you, will stay with you throughout your life. और जब ये तजर्बा आपको होगा, आपको पता भी होगा और जिंदगी भर आपके साथ रहने वाला है। But keep it as your personal gift. ये आपका जाती तोहफा है। You cannot share with anyone. If you try to articulate to people what it is, those who have not had the good fortune of being touched by this light will not necessarily understand. Why? Because you have a unique experience. They may have some different experience. Every incident, every experience, every touch of light is so unique, customized to you that other will not understand. Therefore, for each murid in front of me today, sit in peace, sit in humility, sit in eagerness to be touched by this special light. आप आराम से बैठे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपके लिए मखसूस है। आप आराम से बैठे, आजीजी के साथ बैठे, हाँ उम्मीद के साथ बैठे, लालच के साथ नहीं, उम्मीद के साथ बैठे कि ये नूर मुझे किसी तरह से भी छुएगा इंशाल्लाह। Keep in mind that this is a matter of soul, it is not a matter of body, and therefore if you seek to communicate about this, you will not succeed. याद रखना कि ये रूह की बात हो रही है, जिस्म की नहीं। ये रूह का मामला है, जिस्म का नहीं। इसलिए आप इसके बारे में बात करेंगे तो आपको कामयाबी नहीं होगी। क्यों? कि कोई समझेगा ही नहीं। Don't discuss, you will not be able to succeed in this communication because it is so unique. It is a matter of soul, not a matter of physical that you will be able to explain. No, you will not be. So keep it to yourself. You will not succeed because it is a spiritual matter. क्योंकि ये रूहानियत का मामला है। It is not a material matter. ये जिस्म का मामला, जाहिर का मामला नहीं है। And therefore sit individually in peace, in happiness, in expectation. Be careful not to be greedy. इसलिए जरूरी है कि आप आराम से अपने अंदर खामोशी से, खुशी से, उम्मीद के साथ बैठे, लेकिन लालच के साथ नहीं। It is therefore very, very personal and individual. So when you sit in peace, in happiness, in hope and expectation,
but not greed. उम्मीद रखनी है, लालच नहीं रखनी है. उम्मीद रखनी है लेकिन लालच नहीं. I understand that you may be greedy, but don't be greedy. मौला फरमाते हैं कि हाँ, मैं समझता हूं कि आपको इसकी बहुत ज्यादा चाहत है. उम्मीद रखें लेकिन लालच नहीं. सिट इन ह्यूमिलिटी, आजीजी के साथ बैठे, आराम से बैठे, एकदम अपने आप को जमीन के अंदर गिराकर आराम से बैठे, यानी कि आजीजी के साथ बैठे और एकदम खामोशी से, यानी कि इतना आराम से अपने जिस्म को रखें कि कोई भी चीज आपको टच करे तो आपको फौरन से फील हो. I will come back and I will explain a little bit more in this 3 lines or 4 lines. Let me start from here again. Sit in humility, sit in peace, in search, and inshallah, each one of you will be touched by this special light, and I give you my best special blessing for success in the search that you will be undertaking. When you sit, sit in very much humility, in humbleness, down to the ground, dust under the feet of the Mu'mineen, very, very humble, in peace, not in hurry, but in peace, but in search, but in search. Keep the hope and eagerness, but not greed. And inshallah, each one of us will be touched by this nur, the light, this special light. Why special light? Because that light will be unique to you, special to you. And Imam gives blessing again, his special blessing for the success in the search of this light. दोबारा से मौला याद दिलाते हैं, आजीजी के साथ, आराम के साथ आप इबादत में बैठे और ये रोशनी आपके लिए बहुत ही खास होगी और वो आपको जरूर छुएंगी. मौला फरमाता है कि मेरी ये खास दुआ आशीष है कि आप इसमें कामयाब हो जाएं जो काम आप करने जा रहे हैं. खाना वदान, खाना वदान, खाना वदान. Sit in peace, set aside worldly matter and give your soul time. Give your soul time. Set aside worldly matters. Reminder again. The life of the soul is 96%. Life of the physical body is only 4%. Give time to your soul. Give your soul time. Set aside worldly matters. How much time can you give to your soul? 1 hour is not enough. Because 1 hour is not majority or even balance ibadat. Yes, Baitul Khayal ibadat is of 1 hour. But your
total practice in ibadat needs to be more than that 1 hour. Meaning the practice of the ibadat requires more time from your busy life. Give time to your soul. Give your soul time. One hour is not enough. We must practice during daytime before ibadat 4 o'clock. Maybe start with 3 o'clock or before you go to bed or in the middle of the day. Somewhere this practice needs to take place. We need to give some time to our soul, which is more permanent and long lasting than our physical body. You must set aside worldly matters for few minutes here and there during daytime, during evening, during night, before ibadat. Whatever is convenient for you. But if you are thinking that waking up at 4 o'clock is the ultimate goal, I would suggest humbly to rethink. आपको अपनी रूह के लिए वक्त देना होगा अगर आप चाहते हैं कि रूह की कोई तरक्की हो, खातर खा कोई तरक्की हो। मुला फरमाते हैं आप अपनी रूह को वक्त दें, आप अपनी रूह के लिए वक्त निकालें, दुनिया को एक तरफ छोड़कर कुछ वक्त अपनी रूह को दें। 4 से 5 काफी नहीं है, वो तो इबादत का वक्त है, उसकी प्रैक्टिस उससे पहले होनी चाहिए, चाहे वो दिन में हो, दोपहर को हो, शाम को हो, रात को हो, इबादत में उठने से पहले हो, 3 बजे हो सुबह को, लेकिन कोई वक्त निकालना होगा, देना होगा, क्योंकि आपकी रूह जो है वो परमानेंट है, आपका जिस्म टेम्पररी है। आप अपनी दुनिया को एक तरफ छोड़कर कुछ वक्त अपनी रूह के लिए निकालें और जरूर निकालें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रूह तरक्की करे और वो सामान जो हमें आगे भेजना है वो आज हम भेज दें। Inshallah, each one of you once in your lifetime will be touched by that special light, and I give you my special blessings for success. खाना वदान, खाना वदान, खाना वदान। मौला आखिर में फरमाते हैं कि इंशाल्लाह आप हर एक अपनी जिंदगी में जरूर इस रोशनी से फायदा उठाएंगे और इसमें सक्सेसफुल होंगे और ये रोशनी आपको छुएंगी, जरूर छुएंगी। और मौला अपनी स्पेशल बहुत ही प्यार भरी दुआ आशीष फरमाते हैं। खाना वदान, खाना वदान, खाना वदान। Let me stop here and inshallah we will continue. We have 2 more pages in this Farman following week. जी। Subhanallah, sir, Subhanallah. Friends, please share your questions in the chat, or you can unmute your device or use the hand raise feature to ask the question. So we have one question in the chat. A friend's asking, when people ask you if you attend Baitul Khayar, how would you respond?
Why would anyone ask you? I don't remember last 20, 30 years, I don't remember anyone asking me. Why would anyone ask? That is so personal. That is so personal. But because you ask question, how would I answer? If that is what you're asking, how would I answer that question? I will say, me? You know me, I'm so lazy. I sleep all the time, all day long. That would be my answer. I will not tell them because it is not their business. It is between you and your Imam. No, don't show that you are going to Jamaat Khana or doing Ibadat. That is between you and your Imam. It is no one's business. They should not be asking you this kind of question. But if they do, stay humble. Show your humility. Show your humility. And like I said, I don't remember anyone asking me. Why would anyone would ask you? Gee, So another question, how can you stop other thoughts entering your mind during Bandagi? that answer has been given just 5 minutes ago. Practice, practice, practice. You must practice. Setting aside worldly matter requires practice. If you are thinking you're going to wake up 4 o'clock in the morning and all of a sudden you're going to turn off the machine and turn off your worldly thoughts, it does not happen. It does not happen that way. How do you do it? Practice during the day. Practice during evening before you go to sleep. 3 o'clock in the morning. Practice, practice, practice because it requires practice. And that's how you do it. Believe me, it's not that hard. If you practice, you can do it. But it does take practice. G. All right, so we don't have any question in the chat this time. Okay, so I think we have another question. What are we searching in Ibadat? Can you please explain it? Yes. Most of us, when we go to receive the blessing of the bowl from the Imam, we think that we are receiving a bowl, a word. What we are missing or not understanding that when Imam gives you the bowl, it is like a handkerchief. Along with the bowl, he gives you the blessing, the special blessing, and the nur with it. And he closes that and he blow that into you by giving you the Isme Azam. Now the Isme Azam through your ears have come into you. What does this bowl has? The blessing and the nur. What are you searching for? What are you searching for? The nur which Imam have already given to you. That's what you are searching for. Seek that light, Imam says. Search and seek that light which Imam has already given to you. In one place, Imam says, it's not outside, it's inside you. He has already given that to you. Search for that. Seek that light which he has already given to you. Nachiz and Garib have mentioned and
tried to teach this understanding for last few years. We need to understand that light that we are seeking and searching for is not going to come from outside. Matter of fact, Imam has already given you that, and it is inside of you. Just call on your bowl, watch my hand. Call on your bowl, and bowl will open. In that, what you will find, the special blessing of the Imam. And what will you find inside of that? Noor. Is not outside. If we do not know this, or if we don't understand this, how will you seek and search? Whoever has asked this question, thank you for asking this question again, because it looks like it needs reminder again and again. When we have the bowl, we have the blessing, and we have the nur already in us. And that is what you are seeking and searching for. Subhanallah. Thank you so much for asking. Ji. Right. Friends, you can unmute your device or you can use the hand raise feature to ask questions. All right, so looks like nobody has raised their hand. But sir, I found very interesting in this Farman. Go ahead. Go ahead, Kamran Sahib, finish your thought. Okay. So always Imam says, sit in peace and sit in humility. But this one I found another one. The Imam says, sit with eagerness to be touched by this light. So, I mean, I understand the meaning, but in this context, how would we understand this? Hope, hope. उर्दू में इसको जुस्तजू कहते हैं. Justuju. Eagerness. You know, we are always eager to go to places, right? We get excited over it. That's what Imam is saying. Keep that excitement alive. Don't give up. Don't give up. You know, if it doesn't happen to you today, don't give up. Keep that excitement going. Be hopeful. Don't give up. It's so beautiful. Imam truly is blessing us and teaching us like a children. You know how we teach our children? Don't give up. That's what Imam is saying. Be eager. Be excited. Be excited over what you are about to achieve or what you have taken from the Imam. Be eager. Subhanallah. Thank you, Kamran Sahib. Thank you, sir. Thank you. याली मदद सर. याली मदद. सर आपने भी बताया ना कि ये लाइट आपको टच करेगी. 5 वेज आपने बताया कि सेंसेस से आपको कर. तो सर टेस्ट कैसे होगा फिर? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. बहुत अच्छा सवाल है कि देखें हमारे 5 सेंसेस है और ये सब के सब हमारे चेहरे के ऊपर ही है. 5 के 5. सबसे पहला, और ये बहुत ही जाती चीज है, आप इसको अपने पास संभाल के रखना. नंबर 1, सबसे फर्स्ट पहला जो अमूमन लोगों को तजुर्बा होता है वो सूंघने का होता है, स्मेल का होता है. आंखों का दीदार नहीं होता है, सूंघने का दीदार होता है. अच्छी सी कोई खुशबू आती है. इसके बाद सुनने का होता है, कानों से विस्पर और म्यूजिक वगैरह कोई भी सुनने का तजर्बा होता है. इसके बाद टच,
آپ کو ایسا لگے گا جیسا کوئی آپ کے بہت ہی قریب آ گیا ہے اور کسی نے آپ کے چہرے پر ہاتھ رکھ دیا ہے یا آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا ہے، آپ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیا ہے، بہت ہی معمولی سا. اس کے بعد جا کر کہیں پر دیکھنے کا معجزہ ہوتا ہے، یعنی کہ نور کا دیدار ہوتا ہے آنکھوں سے، وہ سب بھی دیدار ہی ہے. اور چکھنے کا جو دیدار ہے وہ بہت ہی معجزانہ ہے، بہت ہی معجزانہ ہے، اور وہ آگے جا کے ایک تجربہ ہوتا ہے. اس لیے ناچیز ہمیشہ سب کے لیے اور اپنے لیے دعا کرتا ہے کہ مولا ایک نہیں، پانچوں پانچ دیدار سے نوازنا، پانچوں پانچ تجربے کروانا، تاکہ ہمارے پاس نور کا ایک خزانہ ہو، نور کے تجربے کا ایک خزانہ ہو. امام اتنا جنرس ہے کہ وہ ناٹ ون وے، خالی ایک طریقے سے نہیں، 5 طریقے سے آپ کو نوازتا ہے. اور چکھنے کا معجزہ سب سے آخری میں اور سب سے زیادہ عجیب و غریب تجربہ ہے وہ، اور وہ مانگنے سے آتا ہے. یہ میں آپ کو بتانا چلوں کہ اس مقام پر چونکہ آپ کے کان کھل گئے ہوگے، آپ کی آنکھیں کھل گئی ہوگی، آپ کو اس نور نے چھو لیا ہوگا، آپ نے اس نور کو سونگھ لیا ہوگا، اس کی خوشبو کو، پھر آپ کہیں گے، آپ سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ اب آپ کو کیا چاہیے. آپ بولیں گے ایک مرتبہ میں نور کو چکھنا بھی چاہتا ہوں. تب جا کے آپ کو یہ تجربہ کروانے میں آئے گا. بہت ہی بلند کی بات ہے، لیکن انشاءاللہ امام کے جو کھانا ودان اسپیشل بلیسنگ ہمارے ساتھ ہے، اس کے سامنے یہ تمام چیزیں ممکن ہے امام کی کھانا ودان کی وجہ سے. جی تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ. بہت خوب، بہت خوب، بہت اچھا سوال. جی Subhanallah, sir. Think some friends asking, please show again the action of hand. اوکے. I missed it. جی تو جب امام ہمیں اس میں اعظم نوازتا ہے تو ایسا ہے جیسا رومال، سپوز کریں کہ یہ آپ کا رومال ہے، رومال کے اندر آپ کو اس میں اعظم اپنی دعا آشیش، خاص دعا آشیش اور نور دے کر وہ بند کر دیتا ہے اس میں اعظم کو، اور آپ کے کانوں میں پھونک دیتا ہے، آپ کے کانوں سے وہ آپ کے اندر اتر جاتا ہے. اب جب آپ اس میں اعظم کو پکارتے ہیں، آپ اپنے اسم اعظم کو پکارتے ہیں تو وہ جواب کے طور پر آہستہ آہستہ کھلتا ہے. یہ آپ کے اسم اعظم کا جواب ہے. جب آپ اسم اعظم کو بہت زیادہ پکاریں گے تو وہ اسم اعظم کھلتا جائے گا، کھلتا جائے گا. اس کے اندر سے آپ کی جو دعا آشیش ہے، بلیسنگ ہے امام کی، وہ آپ کے لیے کام کریں گی، اور اسی کے اندر سے وہ نور آپ کے اندر پھیل جائے گا. کبھی وہ نور سونگنے کے طور پر، چھونے کے طور پر، سننے کے طور پر، چکھنے کے طور پر، دکھنے کے طور پر وہ آپ کے اندر پورے جسم میں پھیل جائے گا. کبھی وہ آپ کو نظر آئے گا، کبھی آپ کو سنائی دے گا، کبھی آپ کو سننے میں آئے گا، کبھی آپ کو چھوئے گا وہ، اور انشاءاللہ ایک دن اس کا مزہ بھی آپ چکھیں گے. جی کیونکہ وہ آپ کے اندر ہے. رومال کو کھول دیں، پکارے اس کو، اسم اعظم کو پکارے، سختی سے پکارے. ناچیز نے ایک مرتبہ ڈیمونسٹریشن کیا تھا کہ آپ کو اسم اعظم کو کس طرح سے پڑھنا ہے، کتنا سختی سے پڑھنا ہے. ریمبر اسم اعظم پڑھنے کے اسٹیجز ہیں. پہلے اسٹیج میں آپ کی جو اسپیڈ ہوگی وہ 1 منٹ کے اندر 120 ہوگی، یعنی کہ ہر سیکنڈ میں
2 मरतबा आप अपने इसमें आजम को पढ़ेंगे, इतनी स्पीड से पढ़ेंगे आप। और जब आप इनिशियली शुरू में इसका आगाज करेंगे तो बहुत ही जोर से, यानी कि आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए, सबको नहीं, आपको आवाज आएंगी। एग्जाम्पल में डेमोन्स्ट्रेशन दे सकता हूं। याली 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 याली, इतना जोर से और इतनी स्पीड से कि आपके अंदर से याली याली की आवाज आनी चाहिए। और उसकी स्पीड कितनी होगी? प्रैक्टिस करेंगे आप। दिन में आप गिने, दिन में बैठकर तस्वीर लें 100 दाने की या 33 दाने की, 1 मिनट में वो 4 मरतबा घूम जानी चाहिए, यानी कि 120 मरतबा, हर सेकंड में 2 मरतबा अपने इसमें आजम को दोहराएं। हाँ, अगर आपके पास एक वर्ड का इसमें आजम है, अगर आपके पास 2 वर्ड का इसमें आजम है तो वो 60 से 70 मरतबा होगा। जिस तरह से यालिया मोहम्मद, यालिया मोहम्मद, यालिया मोहम्मद, यालिया मोहम्मद, 2 अल्फाज है, 2 वर्ड है, तो वो 60 से 80 मरतबा होगी, 120 मरतबा नहीं। आप समझ गए कि आपकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए और जोर ज्यादा होना चाहिए। ये शुरू की मैं बात कर रहा हूं। 40 दिन तक पहले इसकी प्रैक्टिस कर लें आप, दिन में, शाम में, रात में, और फिर सुबह को 4 बजे। जब इसमें आप कामयाब हो जाएं, फिर आपकी जो आवाज है इसको स्लो कर दें, स्पीड नहीं, आवाज को स्लो कर दें। अब आप जब पढ़ेंगे तो किस तरह से पढ़ेंगे, सुने पहले। याली 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 याली, पहले हमने किस तरह से पढ़ा था? याली 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 याली। अब किस तरह से पढ़ेंगे? याली 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 याली। आपकी स्पीड बढ़ जाएंगी, आवाज स्लो हो जाएंगी। फिर 40 दिन के बाद दोबारा से तब्दीली आएंगी। याद रखें कि जिस तरह से हमारी दुनिया के अंदर हम हर चीज को प्रैक्टिस करते हैं, जहाज को उड़ना होता है तो पहले जोर से उड़ता है, फिर जाके वो आराम से उड़ता है। यही हमारी प्रैक्टिस होगी इबादत की। फिर तीसरे ट्राई सेमेस्टर के अंदर आप क्या करेंगे? आपकी स्पीड भी थोड़ी कम हो जाएंगी और आवाज बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। अब आप जब पढ़ेंगे, यानी कि आपकी आवाज और स्पीड दोनों कम हो जाएंगी, यानी कि आप अब तैयार हो गए हैं किसके लिए? वो आवाज जो अंदर से आने वाली है उसको सुनने के लिए। आपके इसमें आजम आपकी रूह की आवाज सुनने के लिए तैयार है। आप इस तरह से आस्ते 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 आपके अंदर से वो रुमाल खुल जाएगा और उसके अंदर से आपका इसमें आजम आपसे बातें करने लगेगा, आवाज आएंगी आपको। आपका जो दुआ आशीष थी, ब्लेसिंग थी, वो आपको खुशी देंगी अंदर से। ऐसा लगेंगे जैसा बाग उगाया है आपके अंदर, खुशी का एक बाग होगा आपके अंदर, और फिर उसी के अंदर से नूर आपके लिए काम करने लगेगा, आपके अंदर फैल जाएगा, जिसका बयान मुश्किल है, जिसको समझना मुश्किल है, जब तक कि आप उसको जाती तौर पर उसका तजर्बा नहीं करते हैं। इंशाल्लाह। बहुत खूब, बहुत अच्छे सवाल, थैंक यू। या अली मदद। All right, so it seems like Gulamba is unmuted himself, mute himself. So we have the next question. I'm trying to understand this question. So friends asking, doing like, I think when you say the Ismail Azam recite very fast,
It slows me down when I visualize my naksh. Can I do without naksh? Practice, practice, practice. That's how you do it. So there would be a time where you don't need your naksh anymore. If your speed and concentration is completed, you will not need the naksh anymore. I don't know what stage you are at. If you are at the stage where your speed has taken place and your concentration is there, then you can slow down or you can remove one of those things, meaning speed, sound, or the naksh, depending on your practice where you are in which stage. Initially, you need all practice for that. And yes, if it's bothering you, slow down. It's okay. Remember, whatever helps you, you do that. Those are just the suggestions and the practices of our Buzruk, which they have shared with us. And we are sharing back to you. Ji. Ji Gulam Bhai, are you there? It looks like he is not in here. Okay, no Okay, problem. okay. So friends asking if you could explain in English, not the last question, the question before that. Right. So I was explaining to my sister when she asked about the 5 types of experiences that remember the Noor has been given to you when you went to get the Isme Azam. Imam, within your Isme Azam, he had encompassed his special blessings and Noor like a handkerchief in your hand, like this. And he had blown that into your air. Now it's in you. The Noor will not come from outside but from inside. So when you call on that Isme Azam, and when you call enough time, that Isme Azam will open. And within the Isme Azam will come the special blessing, which will bring you happiness. It would be like, you are in a rose garden where you will have a great smell, a happiness from within you. That is your first experience. And then from that will come the Noor, and Noor will touch you. You will be able to hear your Isme Azam. You will be able to smell that happiness, your Noor. And inshallah, you will be able to see your Noor. But it is inside you and it will touch all over you. Your entire physical body will become luminous, Nurani, happy. There's no description how happy you would be and how much your soul will be flying, 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 inshallah. Ji. So we don't have any question in the chat. Friends, you can unmute your device if you have any questions. Okay, if there are no more, we can stop here. Geez, there are no questions, and I think the Gulamba is not logged in yet. No problem. We can answer his question Yes. next time. Thank Okay. you everyone for joining. Thank you, Kamle Sahib.
Ya Ali Madad, Ya Ali Madad, Ya Ali Madad, sir. Thank you very much. Ya Ali Madad, Ya Ali Madad, Ya Ali Madad, Yali Ya Ali Madad. Yali Ya Ali Madad. Madad, Ya Ali Madad, Ya Ali Yali Yali Madad. Madad. Ya Ali Madad, Ya Ali Madad, Yali Madad. Ya Ali Madad, Ya Ali Madad,